विद्यार्थियों, 9वीं कक्षा के हिंदी क्लास में तुम लोगों का पुनः स्वागत है। मैं आज तुम लोगों के साथ आलोचना करने जा रही हूँ तुम लोगों के पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत चिकित्सा का चक्कर नामक पाठ को लेकर, जिसके लेखक है बेधा बनारसी जी। और बेधा बनारसी जी ने यहाँ इस लेख को एक व्यंग्यात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किए हैं और यहाँ हमारे देश के विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। और इन चिकित्सा पद्धतियों में लेखक ने अच्छा खासा व्यंग भी किया है और साथ साथ चिकित्सकों एवं वैद्य हकीमों के हाव भाव और पोशाकों पर भी कटाक्ष किया है। पहले पाठ्यांश में हमको मिला था कि लेखक कैसे बीमार पड़ता है और उसको देखने डॉक्टर आता है, फिर भी दवा लेने के बाद भी उसके पेट में दर्द की कमी ना होती है, बढ़ ही जाता है उसका दर्द। और साथ ही साथ अड़ोस पड़ोस के लोग भी उसे देखने आते हैं, लेकिन उसको उसकी खबर लेते हैं और साथ साथ एक नुस्खा भी साथ लेते आते हैं या परामर्श साथ लेकर आते हैं, लेकिन उसके दर्द में कोई कमी नहीं होती है। तो आगे क्या होता है, 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी ना हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर चर्चा छिड़ती थी। प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है? राय कृष्णदेव हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं? मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। ऊपर से पान और सिगरेट की चपट अलग। भला दर्द में क्या कमी हो? जेहेतु लेखक पेट বিষত ভুগি আছিল আৰু কেইবাদিনো ধৰি এতিয়ালৈকে 3 দিন পাৰ হৈ গৈছে আৰু কিন্তু তেওঁৰ পেটৰ বিষ কমা নাই। আৰু তেতিয়া বিভিন্ন মানুহ তেওঁক লগ কৰিবলৈ আহিছে বা চাবলৈ খবৰ কৰিবলৈ আহিছে। তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন বিষয়ৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। প্ৰসাদজীৰ নাটকৰ ৰংগমঞ্চৰ দৃষ্টিৰে কেনেকুৱা, নাটকক ৰংগমঞ্চৰ দৃষ্টিৰে কেনেকৈ চোৱা যায়, বা ৰায় কৃষ্ণদেৱে সপ্তাহত 9 বাৰ কিয় দাড়ি খুৰাই, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে চৰ্চাত স্থান লাভ কৰিছে। আৰু কি কৈছে, তেতিয়া লেখকও তাত ভাগ ল'বলগীয়া হৈছে। যদিও তেওঁ পেটৰ বিষ, তথাপি ভাগ ল'বলগীয়া হৈছে। আৰু ওপৰৰ পৰা পান আৰু চিগাৰেটৰ যি তাৰ পৰা ক্ষতি হৈছেই। আৰু তেওঁ এতিয়া চিন্তা কৰিছে যে তেওঁ পেট বিষনো কেনেকৈ কমিব। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा पर। लोगों की सलाह से डॉक्टर सुहाना कतर जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है। यदि उनका नाम रखना ही होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। वे थे यथा नाम तथा गुण। এতিয়া সুহানাথ কাটৰজীক মাতিবলগীয়া হ'ল, যিহেতু বিভিন্নজনে পৰামৰ্শ দিলে লেখকক যে এনেদৰে কিমান দিন থাকিবা। সেইদৰে সুহানাথ কাটৰজীক মতা হ'ল। আৰু তেওঁৰ নামটো শুনি হয়তো ডাক্তৰ চাহজনৰ নামটো শুনি আপোনালোকৰ হাঁহি উঠিব, কিন্তু এইটো মোৰ দুখ নহয়, মাক দেউতাকে যিহেতু তেওঁৰ নামটো এনেদৰে ৰাখিছে। आपकी फीस 8 रुपये थी और मटर का 1 रुपया अलग। তেওঁৰ ফিজ আছিল 8 টকা আৰু মটৰৰ 1 টকা বেলেগ। आप लंदन के FRCS थे। आप लंदनर पर FRCS कोई से। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, मिनटों में दर्द गायब होता जाता है। थोड़ा पानी गर्म कराइए, तब तक यह दवा मंगवाइए। एक पुर्जे पर अपनी दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, 2 रुपये की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वहाँ सुई कोच कर दबा डाली। तो কি কৈছে যে কিছুমান লোকৰ সৌন্দৰ্য ৰাতি ভিতৰতে বাঢ়ি যায়, যিদৰে ডাক্তৰৰ ফিজো ৰাতিৰ ভিতৰতে বাঢ়ি যায়। যি কি নহওক, কি হ'ল, ডাক্তৰ মতোৱা হ'ল। তাৰ পাছত তেওঁ যি অৱস্থা, তাৰ ওপৰত দয়া কৰি তেওঁ ক'লে, কি বুলি ক'লে, যে মিনিটতে আপোনাৰ বিষ গায়ব হৈ যাব। আৰু তেওঁ কি কৰিলে, এটা ইনজেকশ্যন উলিয়াই, মই কৈছোঁ চমুকৈ, ইনজেকশ্যন তেওঁৰ পেটত দিলে। আৰু তেওঁ যি ধৰণে ইনজেকশ্যনটো দিছে বা বেজীটো দিছে, ইয়াত তাৰ বৰ্ণনা দিয়া আছে যে छोटी सी पिचकारी, उसमें सुई लगाई और दवा भरी, पेट में जोर से पहुँच कर दबा दी। और खूब जोरे তেওঁ বেজীটো দিছে, सुई माने बेजी। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली,
कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी वो चली थी और दूसरे दिन प्रातः काल पीड़ा रफुचक्कर हो गई थी। এতিয়া কি কৈছে ডাক্তৰ চাহাবে কিবা এটা কৈ তেওঁ সান্তনা দি গুচি গৈছে আৰু তেওঁ কি কৈছে টোপনি ধৰিছে আৰু ৰাতিপুৱালৈ কি হৈছে লেখকৰ পেটৰ বিষ প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चौहाना कातर जी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो तिल मिला उठे। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता न होगी। वे बोले, यह तो आपकी इच्छा पर है, पर यदि आप काफ़ी एहतियात न करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती है। अगर 6 घंटे की देर और हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। वो तो कहिए कि आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिनों दवा पीजिए। তেওঁ যেতিয়া সুস্থ হৈ ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গ'ল, তেওঁক ধন্যবাদ দিবৰ বাবে তেওঁ কি খাইছিলে, চৌহানাথ কাটৰজীয়ে দৰৱ বহুদিন ধৰি খালে, 2 সপ্তাহ ধৰি খালে আৰু প্ৰতিদিনে কিমান লাগে বুলি কৈছে 18 অনাৰ এটা বটল লাগে আৰু যিটো মানে তেওঁৰ দৰৱৰ সোৱাদ, সেই সোৱাদটোৰ বিষয়ে আমাক জনাইছে। কি বুলি কৈছে যে যদি মৰা মানুহৰ মুখতো যদি সেইটো দি দিয়া হয় কি হয়, সি মানে জিকাৰ খাই উঠিব, ইমানেই বেয়া সোৱাদ, সেই কথাটো কৈছে। আৰু যেতিয়া তেওঁ ধন্যবাদ দিবলৈ বুলি তেওঁ গ'ল, তেতিয়া ডাক্তৰে পুনৰ কি ক'লে যে আপুনি দৱা লোৱা নোলোৱাটো আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, যে যদি আপুনি বিশেষ সাৱধান নহয় তেতিয়া আপোনাৰ এপেণ্ডিচাইটিছ হ'ব পাৰে। আৰু আপোনাৰ শ্ৰীমতী বহুত ভাগ্যৱতী যে 6 ঘণ্টাৰ যদি দেৰি হৈ গ'লতি তেতিয়া তেওঁ গোটেই জীৱন কান্দি থাকিব লাগিলহেঁতেন, আৰু ভাল হ'ল যে আপুনি মোক মাতিলে। সেইকাৰণে আৰু কিছুদিন আপুনি দৰৱটো খাই থাকক। इसी बीच डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत खराब थी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। সাধাৰণ মানুহ কি মানে এনেকুৱা বেমাৰৰ নাম ক'লে ডাক্তৰে লেখকে আমাক জানিবলৈ দিছে যে লেখকে তেওঁৰ আগত ইমান এনেকুৱা বেমাৰৰ নাম লৈছে যিবিলাক হয়তো ডাক্তৰ কিছুমানে নাজানে। এইটোৱে কৈছে যে বা পঢ়া শুনা মানুহো নাজানিব পাৰে। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है कि केवल हमारी कातर जी को ही मालूम है। खैर मैंने दवा जारी रखी, किन्तु তেওঁ কি কৰিলে অব্যাহত ৰাখিল, দৰৱ খোৱা কামটো অব্যাহত ৰাখিল। अभी 1 सप्ताह भी पूरा न हुआ कि 2 बजे दिन को एकाएक सिर दर्द रूपी फौज ने मेरी शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम लिखा था उनका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। এতিয়া কি কৈছে 1 সপ্তাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই, তেতিয়া কি হ'ল ৰাতি 2 বজাত কি হৈছে 2 বজে দিনৰ 2 বজাৰ কথা কৈছে, ৰাতি নহয়, দিনৰ 2 বজাত তেওঁ কি হৈছে চিৰ ৰূপী ফৌজ মানে মোৰ দৰ্দ ৰূপী চিৰদৰ্দ ৰূপী ফৌজ, চিৰদৰ্দ মানে মূৰৰ বিষৰ যি ফৌজ, মানে ইয়াত ব্যংগাত্মক দৃষ্টিৰে কথাটো প্ৰস্তুত কৰিছে যে চিৰদৰ্দ ৰূপী ফৌজে ক'ত হামলা কৰিছে, শৰীৰ ৰূপী কিলাটোত হামলা কৰিছে বা আক্ৰমণ কৰিছে। ডাক্তৰ চাহাবনে মানে ডাক্তৰজনে যি ভয়ংকৰ বেমাৰৰ কথা তেওঁৰ আগত উল্লেখ কৰিছিল আৰু সেইবিলাকে তেওঁ যি চকুৱেদি চকু পানী ওলাই আছে তাৰ আগত নৃত্য কৰি আছে বুলি কৈছে। मैं सोचने लगा कि हुआ हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहाँ से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए। तो কি কৰিছে তেওঁ পুনৰ কি হয় সেই ডাক্তৰজনৰ ওচৰলৈকে মানুহ পঠিয়াইছে। আকৌ কি হৈছে যিজন মানুহ পঠোৱা হৈছে তেওঁ বিন মাগাই পত্ৰিকা মানে যাক মগোৱা নহয় হেনো তেনেধৰণৰ পত্ৰিকাৰ দৰে পুনৰ উভতি আহিছে বুলি কৈছে যে ডাক্তৰ সাহেব কৰবালৈ কৈছে। इधर मेरी हालत क्या थी उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्टहैंड से भी लिखे तो संभवत समाप्त नहीं। কি কৈছে তেওঁ জানিবলৈ দিছে যে তেওঁ ইমানেই মানে বিষত অস্থিৰ হৈছে যে সৰস্বতী শৰ্টহ্যান্ড এটাৰ নাম কৈছে যে শৰ্টহ্যান্ডৰ দ্বাৰা বা চমুকৈ লিখিলেও মানে কি হ'ব মোৰ বেমাৰৰ কথা কৈ শেষ নহ'ব।
हवाई जहाज के पंख की तेजी के समान तो करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए, पर निःशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई ना किसी की बात मानता था, ना कोई निश्चय ही हो पाता था। কি কৈছে যে মোৰ অৱস্থা ইমানেই বেয়া হৈ গৈছে, কিন্তু কৈছে হাৱাই জাহাজ বা বিমানৰ উৰাজাহাজৰ কথা কৈছে পাংখাৰ দৰে বুলি কৈছে মই বাগৰ হলাইছোঁ। আৰু কি কৈছে যে মোৰ মিত্ৰ আৰু মোৰ ঘৰৱালে মানে ঘৰৰ মানুহখিনিৰ মাজত এখন বৈঠক হৈছে, আৰু এই বৈঠকত কি হৈছে নিঃশস্ত্ৰীকৰণ মানে অস্ত্ৰহীন সেই বৈঠকখনত বা সন্মিলনৰ দৰে অস্ত্ৰহীন সন্মিলনৰ দৰে কোনো কাৰো কথা নুশুনে আৰু একো কথাৰ ওপৰত নিশ্চয়তা নহ'ল বা নিশ্চয় নহ'ল, মানে কি কৰিব তাৰ ওপৰত একো সিদ্ধান্ত কৰিব পৰা নগ'ল। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन प्रस्ताव फैल गए, कौन कौन पास। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई और आयुर्वेद रसिक रंजन, चिकित्सा मातन, कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। ये जे जिखन निःशस्त्रीकरण বা অস্ত্ৰহীন সন্মিলন হৈছিল, সেই সন্মিলনখনত এটাই সিদ্ধান্ত হ'লগৈ শেষত কি বহুতে বহুত প্ৰস্তাৱ দিলে বা তৰ্কবাদ হ'ল। তাৰ পাছত তেওঁলোকে ওচৰতে থকা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ওচৰতে থকা পণ্ডিতজী সুখদেৱ শাস্ত্ৰী, তেওঁ বিভিন্ন উপাধিৰে বিভূষিত কৰা হৈছে যে আয়ুৰ্বেদাচাৰ্য, ৰসজ্ঞ ৰঞ্জন, চিকিৎসা মাৰ্তন, কবিৰাজ পণ্ডিত सुखदेव शास्त्री मतार सिद्धांत हल। कोई 45 मिनट बीत गए परंतु वैद्य जी न आए, न भेजे गए सज्जन का ही पता चला। एक और दर्द आयकर की तरह बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं और भी बेचैनी बढ़ी। अंत में जो साहब गए थे लौटे। এটা কি কৈছে যে ইয়াত মানে সকলো কথাই ব্যংগাত্মক দৃষ্টিৰে উত্থাপন কৰিছে লেখকে, সেইকাৰণে কৈছে যে 45 মিনিট পাৰ হৈ গ'ল, তাক আমি যে কওঁ আমো নাই ফৰ্মতিও নাই এনেকৈ কওঁ যে যিজন মানুহক পঠোৱা হৈছিল তেওঁ নাহিল আৰু বৈদ্যজীও নাহিল, আৰু অলপ কিন্তু তেওঁৰ যি পেটৰ বিষ আয়কৰ বহাৰ গতে কৰ বহাৰ গতে বাঢ়ি গৈছে বুলি কৈছে, আৰু এফালে মানুহ দুজনৰ একো খবৰ নাই আৰু তেওঁৰ অস্থিৰতা বাঢ়ি গৈছে। আৰু সেইখিনি সময়তে কি আহিছে মানুহজন উভতি আহিছে, যিজন মানুহে ডাক্তৰক মাতিবলৈ গৈছে। এতিয়া বৈদ্যজীয়ে কি কৰিছে চোৱা, वैद्यजी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी बुध के संक्रांति में वित्र में शनि की स्थिरता है, 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घटी एकादशी का योग है। तो डॉक्टर साहबे डॉक्टर নহয় বৈদ্যজীৰ কথা কৈ আছে ইয়াত। বৈদ্যজীয়ে কি কৰিছে যে পত্ৰখন ভালদৰে চাইছে, মানে তেওঁৰ মঙ্গল চাইছে বুলি ক'ব পাৰি, পঞ্জিকাত চাইছে, আৰু কি কৈছে বুধৰ সংক্ৰান্তি বৃত্তত শনিৰ স্থিতি হৈছে বুলি কৈছে, আৰু 31 পল আৰু 9 বিপলত শনিৰ নাইকিয়া হ'ব আৰু 1.5 ঘটি একাদশীৰ যুগ আছে, এনেধৰণে চাই কৈছে। उसके समाप्त होने पर मैं चलूँगा, সেইবিলাক শেষ হ'লেহে তেওঁ আহিব। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, मगर वे कह आए थे अतः बुलाना भी आवश्यक था, मैंने फिर उन्हें भेजा। যেতিয়া মানুহজনক পঠিয়াইছিলে তেওঁ কৈ থৈ আহিছে বৈদ্যজীক আনিবলৈ যাম বুলি, আৰু যেতিয়া এইখিনি দশা শেষ হ'ব তেওঁ তেতিয়াহে আহিব। আৰু সেইবিলাক শুনি কবাব মানে জুই ঠেকা মাংসৰ দৰে লেখকৰ কলিজাখন হৈছে বুলি কৈছে, আৰু তেওঁ মাতিবলৈ তেওঁ পঠিয়াই দিছে। कोई आधे घंटे के बाद वैद्य जी एक पालकी पर तशरीफ लाए, आकर आपने मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफेद दुपट्टी डाले हुए थे, इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर जनेऊ था जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे थे। वैद्य जी ने कुछ न पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ली, 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। ইয়াত কি কৈছে যে আধা ঘণ্টাৰ পাছত বৈদ্যজী আহিল পালকিত উঠি, আৰু আহিয়ে কি হ'ল কাষৰ চকীখনত বহিল, আৰু ধুতি পিন্ধি আছিলে, আৰু এখন বগা দুপট্টা লৈ আহিছে তেওঁ, আৰু তাৰ উপৰিও তেওঁ গাত কি আছিল জনেও, মানে কি কৈছে যজ্ঞ পবিত্ৰ লগন বুলি কোৱা হৈছে, যাৰ ৰংটো কি এনেকুৱা দেখা গৈছে যে ইমান লেতেৰা দেখা, তেওঁ যেন এতিয়া মল্লযুদ্ধহে কৰি আহিছে। আৰু কি কৈছে বৈদ্যজীয়ে তেওঁক সোধ পোছ কৰা নাই, আৰু নাৰী পৰীক্ষা কৰি কৈছে যে
वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर अंत में जा पहुंची है। इसके मदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और किसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण होता है। এতিয়া কি কৈছে তেওঁ কেনেকৈ বায়ুৰ প্ৰকোপৰ কাৰণে বেমাৰটো হৈছে বুলি কৈছে। যকৃত কথা কৈছে যে যকৃতৰ বায়ু সোমাই কি কৰিছে পিত্তাশয়ত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু হেকত কি কৰিছে পাচন শক্তিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু কি কৈছে ভোজনীয় পদাৰ্থত বাধাগ্ৰস্ত হৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ বেদনাৰ ইয়ে উৎস বুলি কৈছে বা বিষৰ ইয়ে উৎস। कबीराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध के एक दूसरे ही संचार में चटपटा रही थी। तो लेखक की কৈছে যে কবিৰাজ জীয়ে কি কৈছে আমি সেই বিষয়ে একোৱেই নাজানো। মানে লেখকে একো গমেই পোৱা নাই যে তেওঁ ইমানেই বিষ হৈছে আৰু খঙত তেওঁ এখন বেলেগ সংসাৰত যেনে বাস কৰিছে বা তেওঁ চটপটাই আছে। आखिर मुझसे ना रहा गया। मैंने एक सज्जन से कहा जा अलमारी से आपटे का कोस लेते आए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि मैं अब होश में नहीं हूँ। मैंने कहा दवा तो पीछे होगी, मैं पहले समझ लूँ कि मुझे रोग क्या है। তেতিয়া কবিৰাজে যিহেতু কথাখিনি কৈ আছে তেতিয়া তেওঁ এখন বেলেগ এখন জগতত ছটফটাই আছে বুলি কৈছে লেখকে। আৰু তেতিয়া তেওঁ আফটেৰ কোৰ্চটোলৈ মনত পৰিছে। আফটেৰ কোষখনৰ কথা কৈছে সেইখনৰ পৰা তেওঁ জানিব বিচাৰিছে যে তেওঁ আচলতে বেমাৰটোনো কি। তৎপশ্চাৎ বেদ্যজী সৰক সুশ্ৰুতকে শ্লোক শুনালে। তেতিয়া মানুহে ভাবিলে তেওঁ কিবা বেলেগ এটা হৈছে, ইমান বিষতো যে চিকিৎসা নকৰি তেওঁ বেলেগ কিবা এটা ভাবিছে সেই কথাটো কৈছে। সৰক আৰু সুশ্ৰুতৰ শ্লোক শুনাবলৈ ধৰিলে और अंत में कहा देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी। कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी ने से पिन सुता। 2 दिन दवा की गई। कभी कभी तो कम अवश्य हो जाता था पर पूरा दर्द न गया। CID के समान पीछा छोड़ता ही न था। ये लेखके बर्णना की বুলি দিছে যে তেতিয়া বৈদ্যজীয়ে কি কৈছে সৰক সুশ্ৰুতৰ তেওঁ শ্লোক শুনোৱাবলৈ লাগিছে আৰু হেকত দৱা দিছে আৰু তাক আদাৰ লগত মিলাই খাবলৈ কৈছে। আৰু তাৰপিছত তেওঁ বৈদ্যজীক কি কৰা হ'ল পিছ দি বিদায় দিয়া হ'ল। তাৰ পাছত কি হ'ল লেখকে 2 দিন দৰৱ খালে আৰু তাৰপিছত কেতিয়াবা তেওঁৰ বিষটো যদিও কমি গৈছিল কিন্তু সম্পূৰ্ণ বিষটো তেওঁ যোৱা নাছিল। আৰু এইটো কৈছে যে CIDৰ দৰে ইয়াত ব্যংগ কৰি কৈছে যে CIDৰ দৰে তেওঁ পিছ এৰাই নাছিল। तो विद्यार्थियों आशा करती हूँ कि तुम लोगों को यह पाठ समझ में आई होगी। यह पाठ्यांश क्योंकि पाठ बहुत लंबा है इसलिए हमको 2-3 भागों या 4 भागों में पढ़ाना पड़ सकता है। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि तुम लोगों को समझाने के लिए और आगे की पाठ्यांश लेकर मैं फिर तुम लोगों के पास आऊँगी। आज के लिए यही सही। धन्यवाद।